Pakistan's fragile economy is facing fresh pressure as soaring global oil prices linked to the ongoing conflict with Iran begin to impact daily life. The government in Islamabad has announced sweeping austerity measures to conserve fuel and cut spending. However, the move has sparked criticism from traders and raised concerns about the country's economic stability. Take a look. Pakistan's fragile and import-dependent economy has once again come under pressure as global oil price surge, exposing the country's deep reliance on foreign energy supplies and limited ability to absorb external shocks. Amid the growing economic strain, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif announced sweeping austerity measures in a televised address, warning that soaring fuel prices linked to the regional conflict could further destabilize the country's economy. Under the measures, all schools across the country will remain closed for 2 weeks starting next week, while universities will immediately shift to online classes to reduce commuting and fuel consumption. Government departments will face a 50% cut in fuel allowances for 2 months, and 60% of official vehicles, excluding buses and ambulances, will be taken off the road. आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। The announcement follows a steep rise in fuel prices in Pakistan, with petrol and diesel increased by 55 rupees per litre last week, the largest hike in the country's history. In the city of Lahore, however, the decision to close schools has triggered criticism from small traders who depend heavily on the education sector for their livelihoods. जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियाँ पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे ये और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रीज़न बना के तो ये तरीक़ाकार तो नहीं है। The economic pressure is unfolding against a backdrop of escalating global energy tensions. Oil prices jumped by nearly 20% in early trading at the start of the week, climbing to their highest level since 2022, amid concerns over possible supply disruptions in the Strait of Hormuz, one of the world's most vital oil transit routes. Meanwhile, Iran has named Mojtaba Khamenei as the successor to Ali Khamenei, signaling that hardline leadership remains firmly in control as the regional conflict continues to escalate, further unsettling global energy markets. For Pakistan, however, the crisis once again highlights deeper economic weaknesses. With limited domestic energy resources, heavy reliance on imports, and a history of financial mismanagement, the country remains highly vulnerable to global price shocks. As fuel prices climb and austerity measures tighten, ordinary citizens, traders, and daily wage workers are already feeling the impact
raising fresh questions about Pakistan's ability to stabilize its economy without repeated emergency measures and external financial support.